ओके आप लोगों को आवाज आ रही है बेटा? Okay. So any problem related to किसी को भी कोई प्रॉब्लम है लॉजिक्स प्रो से रिलेटेड? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से लॉजिक्स प्रो के हवाले से काम कहा था. Do you remember क्या काम कहा था मैंने आप लोगों को? So So who gonna show me this now? मैं ये काम का था तो मुझे जरा अपना काम तो शो करें ताकि मैं मार्क करूं who has done the job. So please सबसे पहले I would like to request Hamda, who is ready? Can you raise your hands, Hamda? Was on Logix Pro software. जी, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आपने ये काम नेक्स्ट क्लास में दिखाना है. तो प्लीज वजीहा, तलहा, शहाब, तलहा, शहरियार, हसीब, हमदा, आज बहुत कम स्टूडेंट्स हैं. क्या वजह है आज? जी बेटा. ओके. मुझे एक दो मैसेज तो आए हैं. राइट. चलिए, आप में से जिन लोगों ने काम किया आप लोग तो दिखाए ना, आप लोगों की तो मैं मार्किंग करूंगा. लॉजिक्स प्रो में मैंने आपको ये काम किया, किसने किया अभी तक? Try to add the logic to stop the filling station after 10 boxes are filled. जी, anyone? If you haven't done, please message me. बता दें कि आप लोगों ने काम किया है नहीं किया है. Let's put it in the chat. So tell me the status. Tell me the status of you're working with Logix Pro software. Number one, have you installed and tested the example code?
second thing is have you, yes, of course, yes, have you done the work? जी, इसका वन यस नो करके मुझे बताएं, और इफ नहीं तो इफ नॉट व्हेन विल यू do the work or इसको से जब भी आपने सबमिशन किया फिर इसकी छोटी सी रिकॉर्डिंग करके मुझे बताएं। तो अभी आप लोग इन बाकी सब जितने भी हैं अभी काइंडली दीज आर द 3 पॉइंट्स, नंबर 1 2 3, दोबारा से मैसेज कीजिएगा शहरियार वगैरह। इस दफ़ा आप इस तरह से अपने नाम से मैसेज करें, एक ही मैसेज में 1 2 3 का आंसर हो। यू ओनली नीड टू टेल मी कि आपने इंस्टॉल किया या नहीं किया। सेकंड, इफ यस, हैव यू डन द होमवर्क, और इफ नॉट, ये होमवर्क आप कब करके बताएंगे। तो मुझे ये 3 चीजें आप दे दें ताकि इट बिकम्स लाइक अ कमिटमेंट, एंड देन आई शुड नॉट एक्सपेक्ट, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने आराम से कर लिया होगा, लेकिन यू हैव नॉट डन। सो प्लीज आंसर मी लाइक दिस, 1 यस, ठीक है, फिर 2 नो, the 3 should be, for example, by 5th December or something like this. Okay, yeah. You will do it by, for example, I will complete it by 5th December. फिर मैं नोट कर लूंगा। I give you the flexibility, जिसको जितना टाइम चाहिए वो ले ले, but this is what I want everyone, ठीक है। By the end when I will collect, so तो फिर मैं उसकी मार्किंग करूंगा। आई हैड इन माइंड कि आज से मैं 5 नंबर की आप लोगों की मार्किंग करने वाला था, बट नो वन हैज डन इट। Okay, everyone got it? Please, everyone got, if you got the message, what I am telling you, just raise your hands. ताकि मुझे पता चल जाए कि किस किस को बात समझ में आ गई है और कौन कौन टेक्स्ट के ऊपर मौजूद है। Only Hamda is listening. शहरियार, okay. यहाँ तक जितनी बात हमारी हुई है, जिसको समझ में आ गया, प्लीज रेज योर हैंड। गुड। Okay, so let's start now. Okay, so this was the recap, और हम शुरू करते हैं अपनी आज हम बात करते हैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के। वंस यू आर डन विद द लॉजिक्स प्रो, तो उसके बाद फिर हम वापस आएंगे प्रोग्रामिंग की तरफ। अब मैं प्रोग्रामिंग में कुछ बातों को आपसे जिक्र कर दूं। हमने वहाँ पे देखा था कि वी हैड द कॉन्टैक्ट्स एंड द कॉइल्स, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। व्हाट वी वर लुकिंग एट इन द लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग वाज एलिमेंट्री एलिमेंट्स हैं हमारे बिल्कुल जो प्रोग्रामिंग के, द कॉन्टैक्ट्स एंड कॉइल्स। बेसिकली whenever it comes to us कि there is a coil or there is a contact, तो we start thinking and we only think about the physical or tangible items.
right? So इस चीज को थोड़ा सा जहन में लेके आइए कि usually we only think about the tangible items when talk about the contacts or coils. लेकिन ऐसा नहीं है. When it comes to the PLC programming language, these are like the programming objects. Okay, these are like the programming objects for us. Or what basically they do, they actually mimic the electromechanical relays. और फायदा क्या है इसका? इसका फायदा ये है कि ये हमारे पास sort of discrete elements, programming elements बन जाते हैं. They just like, they have a function, they have a name. So it's very unique mix. Normally programming में हम सिर्फ प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ एक वेरिएबल का नाम होता है, फिर उसको हम कोई नाम उसके नाम पे फिर हम कोई वैल्यूज असाइन करते हैं, एंड देन वी गिव इट टू सम प्रोग्राम जो कि उसके ऊपर काम करके फिर आउटपुट देता है. Now these contexts are just like discrete programming elements. यानी है तो बहुत छोटा सा एक बिट का है, but it has also a function. तो इसके पास अपनी वैल्यू है, it has its own meaning, function. So these are इसको थोड़ा सा आज हम जो contexts और coils हैं, इनको आज हम एक और नाम देते हैं कि these are basically a sort of some kind of state variables, right? हमेशा contact और coil से आपके ज़हन में इसी तरह का electromechanical relay आएगा. It has some kind of the energizing coil, or there are some contacts. So these are the two things for this. अब ये दूसरा एस्पेक्ट है, इसको जरा गौर से सुनिए. Every contact, now there is a contact, और हर contact के साथ coil भी होगा. Coil and contacts are like now the contacts, basically what they do from PLC programming ladder logic, it's like we are actually reading a single bit from a memory. जब भी आपके पास कोई contact आता है, तो it is basically a contact means I am reading. The program is going to, whenever in the program, ladder program में जब भी कोई I should show you. So the contact is basically the reading. आप लोगों को स्क्रीन पे ये लॉजिक्स प्रोग्रामिंग नजर आ रही है? Let me take it from here. नहीं सर, नजर नहीं आ रही. पीपीटी क्लियर है. मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ. For example, this one. Now what we see here is कि ये हमारे पास एक ये contacts हैं. So these here actually I am reading a bit from the memory. और जो coil है, it is like I am writing into the memory. So इस ladder programming के अंदर आपको left side पे और right side पे जो कुछ भी नजर आ रहा है, basically they are first connected to the bits, एक memory पे mapped है. तो आज हमने एक नई इसकी डेफिनेशन की कि कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि एक्चुअली कॉन्टैक्ट मींस जो आपके लेफ्ट साइड पे ये नजर आ रहे हैं कॉन्टैक्ट्स, आइदर नॉर्मली ओपन और क्लोज्ड. बेसिकली दिस इज ये जब भी प्रोग्रामिंग आएंगे तो inherently program will actually read some memory, a single bit for one contact. And whenever it comes to the coil, तो coil की बात जब भी आएगी तो basically the program is going to write on the memory. ठीक है? So same place we can access for both. जब आप reading कर रहे होंगे तो it will be a contact shape, and when you are writing it will be a coil shape. So I should say that कि इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं यूं लिख लेता हूँ कि ये वाली स्टार्ट बटन, तो इसको रीड
the status of the memory bit connected to the start input. So basically you are read the status, memory read command है ये. इसी तरह से जब आप when you are writing coil जब भी आप पास आ जाएगा तो it's like write the logic, जो भी आपकी logic either 0 or 1 to the memory bit connected to the like, let's say कि run light output. Okay, so this is one thing, इसको ध्यान में अच्छी तरह से रखिएगा, the rest will be very simple. Next we have now when we deal with the ladder diagrams, we need to assign some kind of tags. Tags are assigned. अब ये एक और चीज आ गई जिसको अब हम कह रहे हैं tags. They will be very helpful for us. ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि they will help us in HMI, SCADA and DCS, and you can name. जब भी आपके पास network और network systems जितने भी होंगे उसके लिए हमें this will help us क्योंकि this tag is for example this tag start or I101. Now you can think about कि ये जो ladder है जहाँ जहाँ पे भी LED लगी होगी वहाँ पे और start stop button कोई एक नहीं होता plant में या वैसे भी you will see many start and stop buttons, run LEDs and like these things. So gradually you need some tags जो इतने डिस्क्रिप्टिव हों कि वो आपके पास जो जैसे जैसे आपके पास PLC 1 से 2, 2 से 3 और फिर वो HMI पे जाएंगे, SCADA या DCS पे जाएंगे, and even network और IoT के ऊपर, for example, now I should spell out these things. OPC and open process control is a term. Open process control, or this is open process and open process. और इसके अलावा क्या था? IIoT and all these stuff. जैसे आपके पास horizon बड़ा होगा तो you need some tag names. Tag names बहुत important होते हैं. Tag names actually tell a detail. So tag is a very good description of the individuals. Now, okay, so yeah. Now there is an example of a redundant flame sensing system to monitor the status of a burner flame using the 3 sensors. अब मैं एक example देखेंगे जिसमें 3 sensors हैं और काम हमारा ये है कि अच्छा इसमें ये redundant flame है, so I should highlight this one. ये redundant का क्या मतलब होगा कुछ अभी हम देखते हैं कोई idea redundant का. Redundant is very important term in the field of automation. In redundant, basically we don't rely on we try to increase the reliability of our system by doing the redundancy. And what is redundancy? Redundancy का मतलब ये है कि जहाँ पे आप for example ये flame sensing system है कोई हमारा boilers वगैरह के अंदर ये this is an important aspect. I think there is a disturbance. Can you mute? मैं अटेंडेंस देख लूँ आप लोगों की एक अटेंडेंस स्नैप ले लूँ मैं स्नैप ले लेता हूँ और उसके बाद फिर इसी हिसाब से मैं अपडेट कर दूँगा. So how much time do we have left now? कोई आइडिया है कितना टाइम रहता है अभी? 15 minutes और टाइम कहाँ पे आता है?
how can I see the remaining time? Okay, so हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें there is a flame sensing system and we want to monitor the status of yeah, the status of the burner flame. और इसके लिए हम यूज करेंगे 3 sensors. ठीक है, 3 sensors we are going to use. इसका purpose क्या है? The purpose is to indicate the burner is lit. If at least 2 out of the 3 sensors indicate the flame, right? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 2 out of the 3. 2 out of the 3 will show कि there is a flame. तो अब हम मानेंगे, वरना अगर if only one sensor indicates the flame, or if no sensors indicate the flame, the system will be declared the burner to be unlit. By the way, industrial boilers और burners वगैरह वो multiple उसमें होते हैं, तो बाज़ औक़ात आपके पास pilots चल रहे होंगे, तो pilots हैं, और इस तरह से this is a mixture or array of the flames. Anyway, without going into detail, हमारे पास 3 sensors हैं. So the burner status will be visibly indicated by the lamp, और एक फिर हम इसको शो करेंगे 3 सेंसर्स के बाद एक लैंप को यूज करेंगे to show the human operator in the control room कि हाँ वहाँ पे फ्लेम चल रहा है. So इसकी जो वायरिंग डायग्राम है it will be like this. आप लोगों को प्रेजेंटेशन साफ नजर आ रही है? इसको मुझे फुल स्क्रीन करने की जरूरत तो नहीं है? यस सर, नजर आ रही है. मतलब अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये I need to बड़ी कर दे, बल्कि ये छोटे छोटे. it's visible. यस सर. जैसे यहाँ पे L1 है, L2 है, ग्राउंड है. ओके, यस सर. नाउ दिस इज द सिस्टम वायरिंग. अब एक कोई भी हमने पीएलसी ले लिया, इसके पावर सप्लाई है, देन वी हैव द प्रोसेसर के बाद ये मॉड्यूलर पीएलसी की तरफ हम देख रहे हैं, तो उसमें फिर एक इनपुट मॉड्यूल लगा हुआ है और फिर एक आउटपुट मॉड्यूल है, इसके ऊपर एलईडीज भी नजर आ रही हैं. एंड देन वी हैव अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं फ्लेम डिटेक्टर पे. दिस मे बी समवेयर इनसाइड द प्लांट, और okay, so this may be inside some plant or burner hai, and we have the 3 sensors: sensor number A, sensor B, and sensor C, right? And they are the wide. अच्छा, ये they are wide here. ये अगर आप गौर से देखें तो this is L1 is ladder programming में देखेंगे तो L1 will be this one, L1 line, and then we have the L2 here. Okay, L2, and then here we will have the logic. और इस logic में if you see, this is हमारे पास जो output है, this is our output, and you can see the output is connected to the output module. And क्योंकि ये AC का 120 volts का bulb है, तो this is connected with the AC. This is the AC output. ये जो आपके पास है AC output module है, लेकिन है ये discrete है. Now try to understand. This is a discrete output. I should write it. This is a discrete. This is a discrete output module. लेकिन it can control the AC loads. ठीक है, यानी AC loads को it can on and off. ठीक है, AC loads के लिए. Okay, so this is the output. इसकी ladder diagram हम आगे जाके देखेंगे. Sorry. Okay. Now, and these are the inputs. So these all are inputs are connected to the input module. और input module की IN0, IN1 और IN2 के ऊपर है. So what we will be expecting is जो ladder diagram इसकी बनेगी, the L1 and L2. हमारे पास there should be
ये हमारे पास 3 सेंसर्स होंगे. They will be somehow connected in 0, in 1, और ये आपके पास है in 2. ठीक है, ये सब कनेक्टेड होंगे एंड आउटपुट पे आपके पास ये बल्ब जो है जिस इज आउट 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 0 जो है ये लाइट करेगा. तो इसकी क्या लॉजिक होगी? इसकी हम लॉजिक देखते हैं कि each flame sensor outputs a DC voltage जो इंडिकेट करेगा. अगर आपके पास 24 वोल्ट डीसी है फ्रॉम द सेंसर, इट मींस कि ये इट्स ऑन. अगर 0 वोल्ट डीसी है तो इसका मतलब है कि आपके पास वहां पे फ्लेम नहीं चल रहा. Therefore, 3 PLC discrete input channels are connected to the sensors. Okay, and then we have an indicator lamp, which is 120 volts light bulb. It is powered by the AC. ये AC से directly हमने power किया हुआ है. If you see, it directly goes here. और इसकी जो controlling है, it will be done by the this output module. Okay, so this is ये connection में तो कोई confusion नहीं है कि किस तरह से ये connected हुए हैं. अब हमें टैग असाइन करना है. टैग किस तरह से हम रखेंगे? इनके सूनर हमारे पास आईओस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं. जैसे मैंने कहा कि अब अचानक आप अब इसी सिस्टम को आप HMI में और स्काडा वगैरह में यूज करेंगे. सो द टैग नेम्स विल मेक द लैडर प्रोग्रामिंग मोर रीडेबल. दिस इज इम्पोर्टेंट. और टैग का फायदा क्या है? टैग फॉर एग्जांपल दिस वन, इन सेंसर A, इन सेंसर B, एंड फ्रॉम द PID हमने यहाँ तक भी देखा था कि if you remember तो PID में हमारे पास if you recall हम कह रहे थे TIC और 4, 6, 8 जो कि okay, we are left with 10 minutes now, right? Okay, so so these are the tags what I was talking about. Therefore the assigned tag names are symbolic addresses for the input and output. Actual address के अलावा ये हमारे पास symbolic addresses होते हैं. ठीक है, और they are actually written so that के P and ID diagrams के साथ आप मैच कर सकें अपने प्रोग्राम को. So we have these 4 tags here, in sensor A, in sensor B, in sensor C, and then we have the outward nullet. This is the absolute address I1 /0. इसका मतलब है कि स्लॉट नंबर 1 में चैनल 0 के ऊपर आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है. O20 का मतलब है दिस इज स्लॉट नंबर 2. स्लॉट नंबर 2 है ये आपके. ये स्लॉट नंबर है स्लैश और फिर चैनल नंबर. सो वी हैव समथिंग लाइक दिस. we have slot number and then we have channel number. ठीक है, ये इस तरह से एलन ब्रैडली की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. डिफॉल्ट टैग नेम्स, अच्छा दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. आपने अगर टैग नेम नहीं भी दिया तो देयर इज अ डिफॉल्ट टैग नेम फॉर दिस वन, जिसका तो यानी यू कैन आल्सो एक्सेस थ्रू दिस. सो इट इज लाइक local :1. ठीक है, दिस इज द स्लॉट and then this I dot data. This is important to understand क्योंकि आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए क्योंकि there are occasions के ये जो default tag names है, ये जो आप नाम रखेंगे वो मिस हो जाए. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये बेसिकली जो नाम है, जी बेटा किसी को कोई सवाल है? यार अटेंडेंस का नहीं कहा करें प्लीज आप लोग क्विज लेक्चर में. ओके, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज एक चीज को ध्यान में रखें कि ये जो आप नाम रखते हैं इन सेंसर ए एंड दिस ऑल, दे आर एक्चुअली दे पीएलसी जो है इन सबको एक अलग से फाइल बनाता है. ठीक है, उसको आप कह सकते हैं सिंबल टेबल. ठीक है, या IO लिस्ट. अभी हम उसका नाम देते हैं देयर इज सम सिंबल
टेबल, ये इसी तरह की फाइल होती है जस्ट लाइक एक्सेल फाइल, ठीक है। ये फाइल भी डिलीट हो सकती है, ये मैपिंग होती है, ये फाइल भी आपके पास पीएलसी में से आउट हो सकती है। आप किसी ऐसे सिस्टम पे जाके काम कर रहे हैं कि जहाँ पे आपके पास जो फाइल्स हैं वो लूज हो गए। तो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि समटाइम्स यू गो टू अ प्लेस और आप वहाँ से पीएलसी का प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं and then you only see some kind of absolute addressing और या रिमोटली आप अगर एक्सेस कर रहे होते हैं। दिस लोकल का मतलब ये है कि नेटवर्क के ऊपर आपके पास मल्टीपल पीएलसीज भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यू माइट सी सम काइंड ऑफ आईपी एड्रेस और द डिफॉल्ट टैग नेम, जैसे आप लोगों का डिफॉल्ट कंप्यूटर्स का नाम होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से डिफॉल्ट नेम जो आपके कंप्यूटर्स का होगा वो उस हिसाब से पीएलसी का भी होता है। सो व्हाट आई वांट टू से हियर इज, इस पॉइंट को जहन में रखिए अगर, एंड वी विल सी अगेन जब भी ये पॉइंट सामने आएगा एक्सप्लोर करेंगे। यू विल mostly assign tags to the key signals, but knowing the default tag names is essential for troubleshooting. And there are many reasons that you may lose the tag names. Yeah, practically it happens कि आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम आया और उसके अंदर कहीं नाम कुछ भी नहीं है। So this is always important to understand what are the basic default tag names. एक और वजह ये भी है जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि हम आमतौर पे की सिग्नल्स को तो नाम दे देते हैं, लेकिन there are some other signals जिनको हम नाम नहीं देते, इग्नोर करते हैं। Now let's write the diagram. अब इसकी मुझे जरा डायग्राम बताएं। We need to write a program for this one. It's very simple. तो कौन मुझे गाइड करेगा इसमें? मुझे बताइए कि I need the program to determine if at least 2 out of the 3 sensors detect the flame. कैसे इसमें मुझे गाइड करें? Anyone? Please help me. अब मैं एक लेटर प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि जो ये काम करे इस सिस्टम के लिए। L1 ये है, L2 ये है, okay? And we have, let's say, the lamp here. ये आपके पास लैंप आउटपुट पे आएगी, एंड तो यहाँ पे अब मैं किस तरह से इन सेंसर्स को रखा हूँ? एनी आइडिया? कि कोई भी दो एक वक्त में जो है ना, एनी टू विल शो मी के फ्लेम जल रहा है। जी okay, so okay, what if I take sensor A here और फिर मैं सेंसर B को लेके आ जाऊं? अगर ये दोनों, तो फिर ये चलना चाहिए। फिर एक और सिचुएशन है जिसमें सेंसर A और सेंसर C, ये दोनों जब तक मुझे इंडिकेशन नहीं देंगे उस वक्त तक ये दूसरी होगी। The third possibility can be के B और C. What do you think? कुछ इस तरह से चलेगा? I think so. Right. So एक दफा हम सेंसर A और B के साथ AND परफॉर्म करते हैं। This is the AND. ठीक है, इन दोनों में से this is called redundancy. तो एक तो आपके पास चैनल ये वाला मौजूद है, दूसरा B और C का है, तीसरा A और C का है। So this way, burner is that if either A and B or either B and C or either A and C, ठीक है। So अच्छा, अब इसी चीज की अगर हम बूलियन में देखें, बूलियन अलजेब्रा की हम बात करते हैं, लीनियर अलजेब्रा है। So boolean algebra says कि and can be done by multiplication or is done by addition. तो आउटपुट फंक्शन अगर आप बनाएंगे तो it will be like this one, A B plus BC plus CA, और इसकी अगर आप सर्किट डायग्राम बनाना चाहें लॉजिकल, so this will be your AB and, और फिर ये second gate is taking care of the BC and the third one is taking care of the CA, ठीक है। ये this is 1, this is 2, this is 3, this is 1, this is 2, this is 3, और finally we have the output here. इन सब चीजों को ऐड जो करेगा वो आपके पास इस और गेट ने किया एंड यू हैव द आउटपुट, ओके। सो दिस वाज लाइट। अब ये काम करते कैसे हैं?
जब फॉर एग्जांपल हेयर, जब आपके पास इस फ्लेम में बी और सी इज सेंसिंग द फ्लेम हेयर, बी और सी जब सेंस कर रहे होंगे तो they both are actually updating an input register here. Practically they are connected to internal memory input register से. और ये जो लाइट आपके पास जलेगी, इससे पहले पीएलसी में इनसाइड द पीएलसी हियर, इनसाइड द पीएलसी देयर इज अ रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर, और इस आउटपुट रजिस्टर की जो आउटपुट है वो पहले मेमोरी बिट 1 होगी. सो बेसिकली हमारा जो पीएलसी का प्रोग्राम है, it is not taking care of all of this stuff. The only thing it is taking care of the internal registers. और ये आउटपुट पे जो है राइटिंग, वो आपके पास ये आउटपुट मॉड्यूल्स करते हैं. इन आउटपुट मॉड्यूल्स को जो लॉजिक है, इनकी जो लॉजिक है वो पीएलसी प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, इनको क्या करना है ये पीएलसी इनको बताता है, और पीएलसी इनको ऐसे बताता है थ्रू इट टॉक्स विद, इसको यूं कर लेता हूं मैं, टॉक्स विद IO modules via memory. ठीक है, सो फ्रॉम हेयर इंशाल्लाह फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. अब हमारे पास लेक्चर का टाइम कम है. मेक श्योर इन द नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों को इंडिविजुअली जो है लॉजिक्स प्रो पे लाइव आपसे डिमॉन्स्ट्रेशंस करवाऊंगा. तो मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल विद द लॉजिक्स प्रो एज वेल. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.